Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about how enzymes operate, basically the mechanisms of enzymes. Like in the previous video I have covered about what are enzymes, what are the properties of enzymes, and what are the types of enzymes. So today we are going to discuss about how enzymes operate. Okay, so let's get started. Just to give you a brief introduction once again, or to those who are visiting my channel for the first time. So what are enzymes? Enzymes are basically biological catalysts which are made up of amino acids. Okay, they are proteins, proteinaceous in nature. What do? They speed up the chemical reactions in the body. They fastens the chemical reaction of the body in simple terms, and remain unchanged after the reaction. So once an enzyme goes into the procedure, or involves into the procedure, it remains unchanged even after the reaction gets complete. Okay, then structure of the enzymes does not change. Okay, so enzymes can be reused for multiple processes. So an enzyme basically accelerates the rate of chemical reaction एज कम्पेयर टू दी अनकेटेलाइज रिएक्शन. जब आप एक अनकेटेलाइज रिएक्शन देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा परफॉर्म होने के लिए, बट व्हेन यू सी केटेलाइज रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम है तो वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगी, उसका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ एंजाइम. केमिकल रिएक्शन को की रेट को इंक्रीज तो कर रही है, बट हाउ इट इज डूइंग इट? सो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. What is activation energy? So the minimum energy required to perform a reaction is called as activation energy. तो वो मिनिमम एनर्जी को एंजाइम्स जो है, एंजाइम जो होती है उसे कम कर देती है, लोअर कर देती है, रिड्यूस कर देती है. हाउ डज एंजाइम्स डू इट? दैट वी विल डिस्कस इन दी फर्दर पार्ट. बट एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है. कैसे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिएक्शन. तो उस तरीके से होता है. अभी एंजाइम जब किसी रिएक्शन को परफॉर्म करती है तो उसकी इनिशियल फ्री एनर्जी और फाइनल स्टेट की जो फ्री एनर्जी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता. यानी कि जो गिब्स फ्री एनर्जी, इफ यू नो द टर्म, आई विल एक्सप्लेन इन द लेटर पार्ट आल्सो, बट गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो सेम रहती है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड. ओके, सो आफ्टर, सो द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब जो सबस्ट्रेट है और जो प्रोडक्ट का जो रिलेटिव अमाउंट है, stays unchanged. उसमें कोई change नहीं होता. So in other words, an enzyme does not change the position of a equilibrium in a chemical reaction. जिस state पे वो chemical reaction equilibrium पे पहुंचने वाली है, equilibrium होता है maximum उस state तक आप उस reaction को perform कर सकते हो. जिस स्टेट पे वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचने वाली है उसी स्टेट पे वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी. रिएक्टेंट का अमाउंट या प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज नहीं होगा. ओनली जो रिएक्शन उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचने का जो टाइम पीरियड है वो जस्ट फास्ट हो जाएगा, वो जस्ट कम हो जाएगा. ओके, so it only accelerates the attainment of equilibrium, but it does not shift the position of the reactant or products. Okay, so how does enzyme works? That we will. Okay, firstly, just understand the properties of enzyme. I have covered what are the properties of enzyme. It is highly specific to substrate. So not every enzyme can bind to every substrate or reactant for that matter. Every enzyme is specific for a particular type of substrate or a reactant. It enzymes works under optimal pH and temperature. It requires an optimum range of temperature and optimum pH, and it is different for every enzyme. Okay, and it can be reused in multiple time, like it can be reused multiple times because enzymes जो होते हैं वो unchanged रहते हैं even after the reaction. So because उसका unchanged state है तो उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं in different types of reactions. Okay, so mechanism of enzyme action. Before going into mechanism of enzyme action, so there are two models, to describe the functioning of enzymes. One is lock and key model, second is induced fit model. But before going into that, before proceeding with that, we will understand simply
about activation energy, about binding energy, what is binding energy, how does enzyme work. So enzyme firstly binds with the substrate and forms enzyme substrate complex. एंजाइम्स जो होती हैं वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एंजाइम कैटालिसिस इन एवरी रिएक्शन. तो एंजाइम बाइंड करेगी विद द सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. अब उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट बनता है जो भी कंपाउंड हम बनाना चाहते हैं या जो भी कंपाउंड उस रिएक्शन के रिएक्शन के थ्रू बनता है. नाउ किस तरीके से एंजाइम बाइंड करती है सबस्ट्रेट पे? तो हर एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट होता है. वो एक्टिव साइट पर ही वो सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है. वो स्पेसिफिसिटी होती है उस एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप में और सबस्ट्रेट की शेप में. वो हम आगे समझेंगे कैसे. तो उस एक्टिव साइट, like as you can see in this picture, ये जो active site है, see the structure of this active site and the structure of the substrate, they are complementing each other, right? So अभी ये substrate इस active site के लिए specific है. इसी तरीके से हर enzyme हर substrate के active site के लिए हर enzyme का active site हर substrate के लिए specific होता है nature के अंदर. Substrate जो होते हैं वो bind करते हैं enzyme के active site पर, and that's how catalysis occurs. So the unique physical and chemical properties of the active site limits an enzyme's activity to specific substrates also. जो specific shape होता है एक्टिव साइट का, उस वजह से कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आकर बाइंड कर सकता है एंजाइम्स के ऊपर. सो द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. कैसे बाइंड करता है सबस्ट्रेट? बाय मल्टीपल वीक नॉन covalent interactions. It can be hydrophobic interaction, it can be hydrogen bonding, it can be ionic interactions between the or reversible covalent bonds as well. Okay, तो उस तरीके से उन bonds के थ्रू एंजाइम की एक्टिव साइट बाइंड करती है सबस्ट्रेट से. तो अभी क्या होता है जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है तो एक फ्री एनर्जी रिलीज होती है, राइट? एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया, इस प्रोसेस में फ्री एनर्जी रिलीज होती है. द फ्री एनर्जी which is releasing in the formation of a large number of weak interactions between the enzyme and the substrate is known as binding energy. उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी का क्या पर्पस है? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी डूइंग इन द फ्रेम? सो बाइंडिंग एनर्जी ही वो एनर्जी होती है जिसकी मदद से एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोअर कर सकते हैं. बाइंडिंग एनर्जी हैज द कैपेबिलिटी टू रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी कैसे बनी? जब एंजाइम सबस्ट्रेट मिले तो उनके मिलने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हुई which is binding energy, which is termed as binding energy, and with this binding energy we can lower down the activation energy, like the enzymes lower down the activation energy, and that's how reaction fastens up. So the binding between the enzyme and the substrate is highly specific. Just to give you a brief understanding of it, so a quick recap: a given enzyme usually binds to only one kind of substrate. This is a very important part. Why I am repeating again and again? Because this is a very important part. Okay, so try not to forget this because the specificity of any enzyme is very important for that matter. Okay, so yeah. Now there are two models. First model is lock and key model, and second model is induced fit model. And every like each of these models have their different theories of, like, according to them. So first model, that is the lock and key model, uh, you know, describes the binding process between substrate and enzymes according to one's theory. So the lock and key model assumes a high degree of complementarity between the shape of the substrate and the geometry of the binding site of the enzyme or the active site of the enzyme. इसका प्रिंसिपल अगर हम समझना चाहें तो क्या है? ये जो शेप है एक्टिव साइट का और जो सबस्ट्रेट का शेप है, दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. यही लॉक एंड की मॉडल है. जो लॉक एंड की मॉडल है वो इस तरीके से लाइक उसका अजम्पशन ये है कि बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी रहती है बिटवीन द शेप
of the substrate and the active site of the enzyme. And that's how enzymes जो है वो substrate के साथ bind करती है. ये complementarity की basis है लॉक-इन की मॉडल का of enzymes function. इसको एमिल फिशर ने इंट्रोड्यूस किया था in 1894. So how do we explain this lock-in key model? Substrate fits exactly into the enzyme's active site. Why? Because the shapes are complementary. The shape of the active site of an enzyme and the substrate are complementary to each other, and they fit like a lock-in key. As key fits in the lock. So this is how the this model explains it, and it forms an enzyme-substrate complex. Okay. As simple as that. This is the first model. Second model is induced fit model. Okay. So what is induced fit model? As the name suggests, the enzymes are flexible. Like according to this model, the enzymes are flexible and that the shapes of the active sites can be markedly modified by the binding of substrate. ये मॉडल कहता है कि जो एंजाइम्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती है नेचर के अंदर और जो सबस्ट्रेट की जो शेप होती है सबस्ट्रेट की शेप के तरह से एंजाइम अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है सबस्ट्रेट की शेप के थ्रू ये कहता है हमारा इंड्यूस्ड फिट मॉडल लाइक एंजाइम स्लाइटली चेंजेस इट्स शेप टू फिट द सबस्ट्रेट एंड इट इंश्योर्स बेटर बाइंडिंग एंड रिएक्शन एफिशिएंसी उसकी वजह से बेटर बाइंडिंग और रिएक्शन एफिशिएंसी हम देख पाते हैं. This is induced fit model. It's a very simple procedure or like model to understand. It says the enzymes are flexible in nature. They can modify their shape according to the shape of the substrate. So now the enzyme substrate complex is formed. We have now very important thing to understand. Okay. So enzymes binds the substrate at active site, reaction occurs, and then product is released, enzymes remains unchanged. This is a simple theory of how enzymes work. Now enzymes lowers the activation energy, it reduces the activation energy. But where does this energy comes from? Where does this energy comes from to lower the activation energy? Like enzymes also require energy, right, to lower the activation energy. Where it is coming from? So it is coming from the binding energy that was released when the enzyme substrate complex was formed. Okay, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तब जो एनर्जी रिलीज हुई जैसे हमने बाइंडिंग एनर्जी का नाम दिया उस एनर्जी के थ्रू एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है. So only the correct substrate can form maximum interactions with the enzymes and thus maximize binding energy. जैसे जब करेक्ट सबस्ट्रेट एंजाइम्स के साथ बाइंड करता है तो उस करेक्ट सबस्ट्रेट के एंजाइम्स के साथ बाइंड करने की वजह से अगर करेक्ट सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बाइंड कर पाएंगे एंजाइम से जिस वजह से बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी because of the complementarity of the shapes बहुत ज़्यादा substrate bind करेंगे if they are right for each other. So now बहुत ज़्यादा binding energy release होगी. So now enzyme can function very efficiently. बहुत ज़्यादा activation energy को reduce कर सकते हैं जिस वजह से process जो है बहुत ही immediately खत्म हो सकता है. So it is very important that a substrate like a correct substrate is getting binded to the enzyme, the active site of the enzyme. Okay. So, the full complement of such interactions is formed only when the substrate is converted into the transition state. अभी क्या होता है जब substrate अभी you can see जब substrate product बनता है इस बीच में there is a state known as transition state. Okay. So वो transition state तभी आ पाता है जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम करेक्ट एंजाइम से बाइंडिंग हुई है तभी वो ट्रांजिशन स्टेट आता है उसी टाइम पे लाइक फुल कॉम्प्लीमेंट्रिटी होनी जरूरी है तभी ट्रांजिशन स्टेट आ पाएगा. ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? तो इट इज द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट फ्री एनर्जी. इट इज द पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट इज द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट फ्री एनर्जी. इस टाइम पर सबसे ज्यादा फ्री एनर्जी जो है प्रोसेस के अंदर रहती है.
in which the reactants are partially converted to products. Substrate partially converted हो चुके होते हैं products के अंदर, so substrates जो हैं या reactants जो हैं वो partially convert हो चुके होते हैं. This is the state of maximum free energy for a particular reaction. Okay, now this is del G. Uncatalyzed, अगर uncatalyzed reaction है मान लो तो उसका del G इतना है, right? Free energy, Gibbs free energy. यहाँ पे del G catalyzed आएगा. This is a del G for the reaction. यहाँ पर आएगा del G catalyzed. ये है एक del G reaction के लिए. Del G is Gibbs free energy. ये है Gibbs free energy substrate to product आने में del G for the reaction. अगर catalysis हो गया तो इतनी del G लगी. अगर catalysis नहीं हुआ तो del G uncatalyzed process के अंदर कितना रहता है. This is the substrate, this is the product. Okay. An enzyme catalyzed chemical reaction in which substrate S is changing into the product P goes through the transition state. Okay, X. Now the substrate and product are corresponding to lowest free energy structures. The point of highest free energy is the transition state in which the substrates are partially converted to the product. Del G क्या है? Del G is the free energy of activation. Activation energy जिसे हम बोलते हैं, del G is the free energy of activation. जो difference है, difference in free energy between the substrate and the transition state. जो transition state और substrate की free energy का जो difference होता है उसे हम del G बोलते हैं. ये del G uncatalysis जब एंजाइम नहीं है तब का है. This is जब catalysis हो रहा है, enzymes involved है. So difference in the energy of the substrate and the transition state is del G, यानी कि Gibbs free energy or free energy of activation जो हमें यहाँ दिख रहा है. This is that. Okay. Enzymes cannot alter del G, it can only reduce del G. Okay, to fasten up the reaction. So the difference in free energy between the transition state and the substrate, जो transition state और substrate की free energy के बीच में जो difference होता है उसे हम activation energy बोलते हैं. It is symbolized by del G. Okay, जो transition state की energy यानी कि ये energy और substrate की free energy के बीच में जो difference होता है उसको हम del G यानी कि activation energy बोलते हैं. ये process फास्टन अप करने के लिए जो एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, दैट एनर्जी. एंजाइम्स फंक्शन टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी और एंजाइम फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. यू कैन आल्सो से इट लाइक दैट. अगर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ही नहीं तो मैक्सिमम फ्री एनर्जी नहीं मिलेगी हमको, मैक्सिमम जो एक्टिवेशन एनर्जी वो नहीं मिलेगी. एंजाइम्स आल्सो फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. Okay, so the greater the value of activation energy, जितना ज़्यादा activation energy का process, activation energy जितनी ज़्यादा होगी, reaction rate उतनी कम होगी, reaction उतनी धीरे होगी. I'll explain it. So this is the diagram explaining the reaction progress. This is the substrate. This is the transition state. Transition state, as I have explained, is the highest, is the state where the energy is highest, the free energy is the highest. And this is the product. So transition state के अंदर जब substrate product में convert होता है, transition state is the time तो partially conversion हो गया रहता है. And हम transition state में जब पहुंचते हैं तब maximum free energy रहती है. Now this del G, what is this del G? This del G is the difference in the energy of the substrate and the energy of the transition state. का जो डिफरेंस रहता है वो, अभी जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना धीरे रिएक्शन होगा, तो इसलिए उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना जरूरी है विद द रिएक्शन टू फास्टन अप. द कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स क्रिएट्स अ रिएक्शन पाथवे whose transition state energy is lower than that of the reaction in the absence of enzyme. अगर एंजाइम नहीं होती तो ये रहता सी, अगर एंजाइम नहीं होती, अनकैटलाइज्ड प्रोसेस होता
तो ये रहती है एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है, इफ यू कैन सी सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस जो है, इट विल बी दिस, यू कैन सी दिस। इस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी राइट। सो अभी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, अभी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन धीरे होगी। बट अभी इस टाइम पे ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट की एनर्जी को हम रिड्यूस करें, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, रिएक्शन फास्ट होगी, प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। ओके, this is how this part works. So the activation energy needs to be lower for the reaction to fasten up. So अगर activation energy कम रहेगी तो more molecules have the energy required to reach the transition state. Activation energy कम रहेगी. You can also understand it, by this example. अगर jump bar है, if jump bar is lower, more athlete will be able to jump the bar, right? उसी तरीके से अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो फटाफट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। ओके, factors affecting enzyme activity. Every enzyme has a set of conditions or optimum conditions under which it works efficiently. Temperature is one, too high or too low affects efficiency of the enzyme. So it should be optimum. pH, optimal pH varies by enzyme. Every enzymes have different set of requirements I just told you. Substrate concentration is very important part. More substrate, faster reaction to a point. जितना ज्यादा सबस्ट्रेट उतनी फास्ट रिएक्शन। सो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी एंजाइम्स की एफिशिएंसी को केटर सॉरी डिफर करता है। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इनहिबिशन। एंजाइम, हर एंजाइम्स के लिए देयर आर सर्टेन इनहिबिटर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बॉडी। ओके, इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंडेड रहते हैं ऑलरेडी, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाते हैं। दिस इज अ बेसिक एग्जांपल, आई एम सेइंग इट इन वेरी लेमन टर्म्स। enzyme inhibition का पूरा procedure I cannot explain, enzyme inhibition in just one slide or in just one video. Enzyme inhibition is different topic and it requires, like a detailed explanation. So I'll cover this topic in the next video, but uh, just to give you a brief idea, there are three types of enzyme inhibition. First is competitive. इसमें inhibitor जो है वो active site पे bind करता है एंजाइम के, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता। नॉन कम्पिटिटिव में एंजाइम इनहिबिटर बाइंडेड रहता है कहीं पे भी और एंजाइम की शेप चेंज कर देता है। नाउ एक्टिव साइट पे नहीं है बाइंडेड, बट दूसरी जगह है, बट शेप चेंज हो गई बाइंडिंग की वजह से, तो सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा। सो अगेन इट इज इनहिबिटिंग द प्रोसेस। अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स ओनली टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद इनहिबिटर बाइंड कर गया उस पे। सो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे इनहिबिटर बाइंड कर गया तो वो उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देगा। सो दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ इनहिबिशन। Examples of enzymes in action. Amylase is one enzyme, it breaks down the starch. Pepsin digests protein, and lactase breaks down lactose in milk. And there are so many thousands and thousands of examples for enzymes. I just covered a brief. What is the importance in biotechnology and medicine? See, enzymes are used in diagnostic kits. It has a wide applications. But just to give you an idea, enzyme inhibitors can be used as drugs also, and it is useful in genetic engineering, industry, diagnostic purposes, and so many processes. For so many purposes. Quick recap. Enzymes are important and vital for life. It speeds up reaction efficiently and specifically. It is affected by various factors such as inhibitor, presence of inhibitors, temperature, pH, and what else? Substrate concentration. So these are some um, factors or some points where enzymes get affected. It is playing a key role, a prominent role in the health, in our health and industry. Thank you so much for tuning in. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. And if you want to, if you want me to explain any particular topic of your choice, please do let me know below in the comment section. I would be more than happy to cater you guys. So for now, thank you so much.